Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello students, join our online course for GPAT Niper Drug Inspector to get assured amazing rank. Hello my dear students, welcome to the Fundamental Pharmacy. If you are preparing for GPAT Niper Drug Inspector Government Pharmacist exam, then this video is going to be very useful, knowledge oriented and helpful for you. So it's my request to you, please watch this video until end. Students, in this video we are going to see knowledge booster dose part 17. That means we have already seen 16 videos on knowledge booster dose. So if you have not seen those videos, please go channel's playlist and watch all these previous videos. Now in this video we are going to see one-liner questions, their answer with added explanation part 2. Let me correct myself. In this video we are going to see very important one-liner questions, their answers with added explanation part 2. So it's my request to you again, please watch this video until end. So first question of today's session is nothing but the clinical application of donepezil. They are asking you what is the use of this donepezil drug. So it is used in the treatment of Alzheimer's disease. So donepezil is used in the treatment of Alzheimer's disease. So यहाँ पे आपको what do you mean by Alzheimer's disease? Alzheimer's disease क्या होता है उसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको. So Alzheimer's disease is a neurological disease. Okay, it is a neurodegenerative disease. So there is a degeneration of cholinergic neuron in the brain. So आपका जो cholinergic neurons होते हैं, cholinergic nerves होते हैं, वो degenerate हो जाते हैं and there is a loss of cholinergic nerve. So because of that, there is a deficiency of acetylcholine in the patient's body. Because of that deficiency, patient develops loss of memory or amnesia, and patient is not able to remember the things. Okay. So there is one movie known as Uri, the surgical strike in the Bollywood. In that movie, the actor Vicky Kaushal and his mom is suffering from this Alzheimer's disease and always forget the things. That is nothing but the Alzheimer's disease. There is a destruction or there is a degeneration of cholinergic neurons in the nerve. Okay, so that's why patient develops a loss of memory. Now, what is the mechanism of action of this donepezil? So in the Alzheimer's disease, what is happening? There is a decreased level of acetylcholine in the body. So you have to increase that. How you can increase the acetylcholine level? By different way. You can provide the precursor, you can increase the synthesis, or you can prevent its metabolism, etc. etc. So this donepezil is known as a reversible anticholinesterase. Cholinesterase is the one enzyme that is responsible for the metabolism of acetylcholine. जो कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम होता है वो एंजाइम एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म करता है. सो दिस डोनेपेजिल इज नोन एज अ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कोलिनेस्टरेज. डोनेपेजिल क्या करता है? कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द एसिटिलकोलिन लेवल इन द अल्जाइमर्स डिसीज. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज डन बाय. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार इसके ऊपर वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम में. सो डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज डन बाय. तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस का? द आंसर इज नथिंग बट द एंड्रोफोनियम. सो व्हाट डू यू मीन बाय माइस्थेनिया ग्रेविस? देयर इज अ वीकनिंग ऑफ स्केलेटल मसल ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का स्केलेटल मसल वीक हो जाता है. क्यों? अगेन ड्यू टू एसिटिलकोलिन डिफिशियंसी. सो एंड्रोफोनियम इज ड्रग यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. सो डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस इज डन बाय टू टेस्ट, अमीलोरेटिव टेस्ट. इन अमीलोरेटिव टेस्ट, Androphonium is used in the ameliorative test. You have to remember androphonium is used in the ameliorative test. And second test for diagnosis of myasthenia gravis is a provocative test. Now in this provocative test, D-tuberculin is used in the provocative test. तो याद रखो androphonium जो है वो ameliorative test में यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, और जो D-tuberculin होता है वो प्रोवोकेटिव टेस्ट में यूज किया जाता है. ओके, सो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन क्रोनिक माइस्थेनिया ग्रेविस ड्रग ऑफ चॉइस इज. तो क्रोनिक माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? सो इसका आंसर है पिरिडोस्टिग्मिन. सो पिरिडोस्टिग्मिन, न्यूओस्टिग्मिन, वाइसोस्टिग्माइन, अम्बोनियम, ओके, एंड्रोफोनियम, these are the nothing but the drug, cholinergic drug. So out of that, this pyridostigmine is a long-acting. Pyridostigmine is a long-acting drug, and it is a drug of choice in the chronic myasthenia gravis. Remember. Now we'll see the next question. Antidote for cholinesterase inhibitor poisoning. There is a poisoning due to cholinesterase inhibitor. So उसमें भी दो टाइप का होता है. cholinesterase inhibitor होता है रिवर्सिबल वाला एक, दूसरा होता है irreversible. So for example, reversible cholinesterase, for example this androphonium,
pyridostigmine, phytostigmine, okay, like that. So these are the reversible one. But what are the irreversible inhibitor of cholinesterase? So organophosphorus compounds, they are known as irreversible inhibitor of cholinesterase. जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो irreversible inhibitor होते हैं, और ये जो ड्रग है pyridostigmine, phytostigmine, neostigmine, endoroponium, ammonium, these drugs are known as a reversible inhibitor. That's why in case of this drug, poisoning seldomly occurs. Now poisoning occurs due to the irreversible inhibitor of cholinesterase, so like pesticides. So what is the antidote for cholinesterase inhibitor poisoning? So it is nothing but the answer is nothing but the pralidoxime. Pralidoxime is nothing but the 2-palm or pyridine 2-aldoxamine. Its chemical name is nothing but the pyridine 2-aldoxamine. इसका chemical name क्या है? pyridine 2-aldoxamine. Now this is known as a cholinesterase reactivator. It is known as a cholinesterase activator, and that's why it is used in the treatment of cholinesterase poisoning. तो होता क्या है cholinesterase poisoning में और irreversible cholinesterase poisoning में? जो organophosphorus compounds होते हैं वो जाके cholinesterase enzyme को bind करते हैं, they inhibit that enzyme irreversibly. तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, नॉर्मली जो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज होते हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम के साथ में, वो इजीली क्या होता है, डिसोसिएट होता है. बट irreversible cholinesterase drugs or organophosphorus compounds, they binds to the cholinesterase enzyme, the complex does not dissociate easily, और वो कुछ टाइम के लिए रहता है, जल्दी निकलता नहीं. Pralidoxime is nothing but the cholinesterase activator, so it is used in the treatment of irreversible cholinesterase poisoning. So poisoning of pesticides, pralidoxime, or it is known as a 2-palm or pyridine 2-aldoxamine. इसका केमिकल नेम होता है pyridine 2-aldoxamine. ठीक है, so you have to remember. क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. Now next question we'll see, adrenal medulla is innervated by which fiber? So adrenal medulla में कौन से nervous supply है? So adrenal medulla is innervated with the cholinergic nerves. Adrenal medulla is innervated with the cholinergic nerve. What is the function of adrenal medulla? To synthesize these catecholamines, adrenaline, noradrenaline, etc., etc. Now we'll see the next question. Potent stimulator of sweat, then testis and saliva. The answer of this question is nothing but the pilocarpine. So potent stimulator of sweat, test and saliva. तो जो saliva बढ़ा देगा, जो sweating बढ़ा देगा, तो ऐसा कौन सा ड्रग है? That is a pilocarpine. Pilocarpine is nothing but it is a cholinergic drug. Its action is similar to acetylcholine. Okay, so acetylcholine will also stimulate the sweat, then saliva, etc., etc. So this pilocarpine is more potent than acetylcholine. So potent stimulator of sweat and taste and saliva, that is testis and saliva, is nothing but the pilocarpine. Now atropine effect on eye is. So what is the effect of atropine on eyes? तो देखो पूछा है कि atropine का eyes के ऊपर क्या इफेक्ट है. Obviously atropine will cause mydriasis and cycloplegia. So mydriasis मतलब क्या? There is an increase in the pupil size, and cycloplegia is a consequences of that. So what is cycloplegia? I would like to explain over here. So cycloplegia मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब आप जाते हो, मान लीजिए कि आप थिएटर में गए हो कोई मूवी देखने के लिए, नॉर्मली आप जाते हो, बाहर जो है वो सनलाइट डार्क होता है, बाहर जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा लाइट से आप सडनली आप थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में बहुत ही कम लाइट होता है, डीम लाइट होता है. सो बाहर ब्राइट लाइट है, अंदर डीम लाइट है. सो जैसे ही आप थिएटर के बाहर से थिएटर में गए तो आपको कुछ सेकंड के लिए आपको ब्लाइंड फील होता है, आपको दिखता नहीं कुछ. सो दैट इज अ टाइम ऑफ एकोमोडेशन. तो आपका जो पिपिल है दैट वाज इनिशियली एडजस्टेड फॉर ब्राइट लाइट. ओके, नाउ यू सडनली गॉन इन द movie theater, so where there is a dim light, so your eyes will take some time to adjust the situation from bright light to the dim light. Okay, now atropine causes the mydriasis and causes the paralysis of accommodation. So paralysis of accommodation means what? Mydriasis करता है ये क्या करता है? पिपिल का साइज बढ़ा देता है, आपका जो सिलियरी मसल है उसका पैरालिसिस कर देता है. एट्रोपिन आईज में जो सिलियरी मसल है उसका पैरालिसिस कर देता है. And because of the paralysis, when you shift from bright light to the dim light, so your eye should be your pupil should be dilated. Your pupil should be dilated. So at that time, pupil does not dilate. Okay? So there is a paralysis of accommodation or cycloplegia. So mydriatic drug and cycloplesic drug, they causes the paralysis of accommodation. So you are not able to
see the objects which are nearer. So for example, when you are in a bright light, so that is nothing but the mydriasis and cycloplasia. So atropine causes mydriasis and cycloplasia. Now we'll see the next question, that is nothing but the isoproterenol. Isoproterenol action is on which receptor? So पूछा है देखो isoproterenol का action कहाँ पे है? So isoproterenol is a selective beta agonist. It is nothing but the beta receptor के ऊपर action होता है. So adrenergic beta receptor, not alpha. So it is selective beta 1 and beta 2 antagonist. Isoproterenol. Okay. Now next question we'll see. Dobutamine mainly effect on the which receptor? So dobutamine कौन से receptor के ऊपर act होता है? So it will act on a selectively beta receptor, that is a beta 1 receptor. Dobutamine will act on a beta 1 receptor. So it is nothing but the, for example, so it has a very similarity in the structure with that of the adrenaline and noradrenaline. जो adrenaline का structure होता है और noradrenaline का dobutamine का structure होता है, उसमें similarity होती है because dobutamine is a derivative of your dopamine. So dobutamine is a derivative of your dopamine. It has a structural similarity with the dopamine, and dobutamine selectively activate this beta 1 receptor used in the cardiogenic shock. The dobutamine. Now drug used to reduce the premature uterine contraction. So you should know here. So uterus is supplemented with the beta receptor. So drug used to reduce the premature uterine contraction. So it is nothing but the terbutaline. Terbutaline is what? It is a beta 2 agonist. So ये beta 2 agonist होता है and it will dilate the bronchi as well as it will dilate the uterine muscle. Because beta 2 receptor सिर्फ आपके bronchi में नहीं होता, ये uterus में भी होता है. So ये uterine relaxant है, terbutaline. ये अस्थमा में भी यूज करते हैं, अस्थमा में भी इसका यूज होता है. Now next question is attention deficit disorder can be treated by. So attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit hyperactivity disorder. Okay, ADHD. ADHD is the kind of disease of children. So there is a deficiency of attention, hyperactivity is there, restlessness is there, irritability in the children are there. So it is treated with the amphetamine, drug known as amphetamine. It is a parasympathomimetic drug, amphetamine. Now we'll see the next question, that is the centrally acting alpha 2 agonist. Centrally acting alpha 2 agonist का example कौन सा है? These drugs are nothing but the drug used in the hypertension. Hypertension में जो पहला क्लास होता है centrally acting drug, उसमें ही आता है central alpha 2 agonist. उसका example आता है आपका clonidine and methyl dopa. Clonidine and methyl dopa. So these two drugs are known as a central alpha 2 agonist. Okay. Now next question, toxicity of phenoxybenzamine is. तो phenoxybenzamine का toxicity क्या होता है? तो obviously phenoxybenzamine क्या है? It is nothing but the alpha blocker. Phenoxybenzamine क्या है? Alpha blocker, adrenergic alpha blocker. So toxicity of phenoxybenzamine result in the orthostatic hypotension and reflex tachycardia. तो phenoxybenzamine जो है phenoxybenzamine जो है, it is a alpha blocker and used in treatment of hypertension. So इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब क्या कि जब आप पोजीशन चेंज करोगे, जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर आप लेट गए तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मींस देयर इज अ हाइपोटेंशन इन द पेशेंट व्हेन पेशेंट विल चेंज इट्स पोजीशन. देन रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 33, नेम द सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट. देखो पूछा है कि बीटा एंटागोनिस्ट कौन है. So obviously all the lols they are nothing but the antagonist. Pindolol, acetabutolol बहुत सारे हैं. उसमें selective beta 1 and selective beta 1 antagonist भी है, cardio selective beta 1 antagonist जिसको अपन बोलते हैं. So non selective beta antagonist भी है और beta blocker भी बोल सकते हैं आप. So selective beta blockers भी आता है उसमें, non selective beta blockers आता है. तो non selective beta blockers में आता है आपका propranolol, then pindolol, acetabutolol, nodelol, okay, sotalol etc. इन द सिलेक्टिव और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आता है आपका मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, ओके, देन आता है आपका अटेनोलॉल, ओके, मेटोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, देन बिटॉक्सोलॉल एंड बिटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेलिप्रोलॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर नोन एज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. Question number 34, drug used in the urinary retention in the benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia की कंडीशन में
जो यूरिनरी रिटेंशन होता है उसमें कौन सा ड्रग यूज करती है। अभी जहाँ पे भी ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया ये टर्म आएगा, so it is nothing but the kind of cancer of prostate gland. So in this prostate gland, you just have to remember there is a alpha 1 receptor at the prostate gland. So alpha 1 blockers are used. So zosins, prazosin, terazosin, oxazocin, these are used in the treatment of benign prostate hyperplasia. और उसमें और एक ड्रग आता है उसको बोलते हैं tamsulosin. So tamsulosin is also there. Prazosin, terazosin, doxazocin, tamsulosin, these are used in the treatment of benign prostate hyperplasia. So drugs used in the urinary retention in case of BPH. Okay, all the alpha 1 blockers, selective alpha 1 blockers. Now question number 35. What is the effect of beta blocker in angina pectoris? So in the angina pectoris there is a your heart is not able to supply adequate blood to myocardium itself. Okay, so that result in the pain, anginal pain. So in that you have different drugs, vasodilators and all that. So what is the effect of beta blockers on in the angina pectoris? Obviously they will reduce the beta blockers, they will reduce the heart rate and myocardial contractility of your heart. तो हार्ट रेट इंक्रीज करके हार्ट रेट डिक्रीज करेंगे और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे reduce the load on heart. So they reduces the after load. So these beta blockers they mainly reduces the preload as well as after load. Remember. Now question number 36. Antidote for opioid poisoning is. So obviously opioid poisoning जो होता है, opioid मतलब जो मॉर्फिन, कोडीन, थिबियन, हीरोइन वगैरह जो ड्रग है, ओके, मेपेरिडीन एक्सेट्रा. सो मॉर्फिन जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं, ओपोइडल पॉइजनिंग, ओपोइडल ड्रग मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, थिबियन, पापावेरिन, वे नार्कोटिन, मेथाडोन, पिथिडीन एक्सेट्रा. सो दीज ड्रग, सो इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ओपोइडल ड्रग व्हाट इज द एंटीडोट? सो ऑब्वियसली नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रैक्सोन. रिमेंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा है. नैल्ट्रैक्सोन, नैलोक्सोन, दीज आर द ड्रग known as a antagonist, opioid receptor antagonist. Okay, they are used in the treatment of opioid poisoning. Now 37 question. Atropine toxicity antidote, मतलब atropine का अगर toxicity हो गया तो उसमें कौन सा antidote यूज करना है? So what is the antidote for atropine toxicity? So obviously physostigmine. So physostigmine is an antidote for atropine toxicity. So atropine and physostigmine, they are an antagonist to each other. So in case of physostigmine poisoning, you have to use atropine. In case of atropine poisoning, you have to use physostigmine. Remember, very important question already आ चुका. Antidote for benzodiazepine, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. You should know. So flumazenil is the antidote for benzodiazepine. So flumazenil is known as a benzodiazepine receptor antagonist. It is known as a benzodiazepine receptor antagonist. Remember. Question number 39. Drug causing dilated cardiomyopathy. तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखो पूछा है कि कार्डियोमायोपैथी कौन से ड्रग करता है. So remember there are two antibiotic which are known as anti-cancer antibiotic, doxorubicin and daunorubicin. ये दो एंटीबायोटिक होते हैं, उनको बोलते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक. ये क्या करेंगे? कार्डियोमायोपैथी करेंगे. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब कि आपके हार्ट का साइज बढ़ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 विल सी. डायरेक्ट कॉम पॉजिटिव हेमोलाइटिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय व्हिच ड्रग? So which drug gives positive COM test? इसका आंसर है methyl dopa. Okay, so that is nothing but the alpha 2 agonist methyl dopa. So first of all you should know what is meant by COM test. COM test or COMS test. So it is a test used to diagnose the hemolytic anemia of the blood. तो आपके hemolytic anemia है या नहीं या फिर चेक करने के लिए. So test to recognize a specific globulin, to recognize the specific globulins present on the surface of RBC. RBC के सरफेस पे अगर कोई एंटीबॉडी है तो वो डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है कॉम्स टेस्ट. कॉम्स टेस्ट जो है उसमें भी दो टाइप आता है. पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट आता है एक, और एक आता है निगेटिव कॉम्स टेस्ट. तो पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट होता है उसमें सरफेस एंटीबॉडी इज डिटेक्टेड. एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन द surface of RBC. If antibody is attached to the RBC, then in positive COM test that is detected. Okay. Now in negative COM test, so antibody is present in the blood, that is detected. Positive COM test is given by methyl dopa. You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist exam preparation. Read 2-3 times before exam and qualify 100%. It's our guarantee with very good rank in a very short period. You can order this from me. 9766654377. This is my WhatsApp number. And also you can see we have very much promising result from previous 5 years, and lot of students they have placed in the Niper just by
doing self-study or by using these books. You can also join our GPAT Niper online crash course where you will have live lecture, recorded lectures, then study material, hard copy, and online test series. Everything is included in the 8,000 rupees only. Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector, read twice and qualify 100% with good rank.